Hello guys, how are you all? I hope everyone is good, fine, safe at your home. And I'm back after so long, and I was telling about you something that today I was going to make a difficult sprite in the maze game. In the previous one video, I was telling you that I made it a game which you can't play. It is very difficult, and if you did this task, this is really good. And okay, now let's show you the code. Okay, now let's start the video. Before starting the video, do like my channel, do subscribe, and please share my videos and do comment on my channel. Okay, so okay, now let's start the video. Let's start. So first I'm gonna show you the little code here from here. Okay, I'm gonna show you all together so that you can took a screenshot, and it will be easy for you all to to see, because in one page you can see all everything clearly. If I shown you differently, you will not be able to see it. So this is, I hope you can see this clearly. Okay, so here I have one paragraph, two, three, four, and five paragraphs I have here, which is one is up arrow, and then one is when flag clicked, and when down arrow key pressed, and when left arrow and right arrow. Okay, which is very important to left arrow and right arrow means these arrows, okay, to move that sprite. Okay, so this is the code of this, and I hope you saw this, and let's move to the next one. Okay, I'm showing you all together because I don't want to make the video so long. This will be a small video. Okay, so um this is the code, another code. Okay, when flag clicked and forever if touching color, then so, and then glide 1 seconds to x minus 140, y minus 115. If touching color red, then say yeah, I did it for 2 seconds, then stop all. Okay, so this is the code of it. And okay, now let's move to the second sprite code. Oh, I forgot to tell you all. I just took this sprite from the same which how from where we can take, जहाँ से हम लेते हैं वहीं से मैंने वो लिया है. Okay, so here you have to search beetle. You can search beetle, or see, you can see here, this is a beetle and there is colors, so you can select from there. And this is the one more sprite I got it, which is the ghost sprite name. And a treasure means a wood kind. Okay, a wood kind of. And now let's move to the second sprite code, which is a ghost, which is so simple code, and there is nothing here anywhere else. No, there is nothing, just this much code. So I'll zoom it for you all to see it clearly. Okay, I hope you can see now. When flag click forever, move 5 steps if on each bounce. Okay, I hope you can see it clearly. Okay, so and this was the code of this ghost. And let's move to the next treasure sprite code. Okay, next sprite code. So let's move to that. Okay guys, so one important thing I want to tell you all. Okay, यहाँ पे ना जो treasure code है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे कोड नहीं रखा है, जस्ट इसको स्प्राइट को यहाँ पे जस्ट रखा है मैंने, कोई भी कोड यहाँ पे नहीं है. सो दैट इज़ फाइन, यू कैन सी हियर. सो यहाँ पे कोई भी कोड नहीं है, जस्ट आपको स्प्राइट लेके वहाँ पे रख देना है. सो ओके, एंड अब हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं. So what we have to do is we have to just escape from this monster which is going here, from this ghost. Just we have to escape here from. Okay, so now let's just move to our work. तो यहाँ पे ऐसे just खेलना, आपको इसके एरोज वाइज पे जाना है. ओके, यहाँ पे जाना है एंड उसके मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करनी है आपको. ओके, I'll try.
ओ माय गॉड, ये ऐसे ही हो जाता है हमेशा। ये कोई भी लेवल जो है ना मतलब पार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी लाइंस पे टच हो जाएगा तो वो मतलब गेम आउट ऑफ हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई अगेन इफ वी कैन देन। ओ माय गॉड, यस फाइनली फाइनली आई डिड दिस। एंड यहाँ पे देखो, ओ माय गॉड शिट, ये फिर मतलब आउट हो गया गाइस फिर से। सो ना ये गेम बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। इससे पहले मैं वीडियो को 1 मिनट पॉज करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। Yeah guys, I finally did it. I finally did it and this is very amazing. I finally did this. Yeah, I did it. यहाँ पे एक मैसेज आया था, सो मैंने वीडियो पॉज किया था। आपको अपने आपने देखा होगा वो मैसेज। ओके, सो दिस इज़ द गेम इज़ सो डिफ़िकल्ट लेवल एंड आई डिड इट। सो फर्स्ट टाइम मैंने ये किया आपके सामने, यहीं पर मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। सो मैंने कभी ट्राई नहीं किया गाइज। सो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो और कौन से लेकर आऊँ। ऐसे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मुझे कमेंट करते रहिए। ओके, सो एंड मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यूट्यूब क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। पर मैं इस वीडियो में आपको जस्ट बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी अगर आप ट्राई करो तो। ओके, जस्ट कमेंट करना मुझे। ओके, सो यूट्यूब क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है, अपना जो आप वीडियो देख रहे हो उसके आपको आपके अप राइट कॉर्नर में आपको वहाँ पे सेटिंग या फिर 3 डॉट्स नज़र आएंगे, तो उस डॉट्स को क्लिक करना है। वहाँ पे क्वालिटी ऑप्शन होगा या एडवांस ऑप्शन होगा। क्वालिटी एडवांस, कोई भी अगर आपका फ़ोन अगर अपडेटेड है तो आपको एडवांस आ जाएगा, अगर नहीं अपडेट तो आपको क्वालिटी ऑप्शन आएगा। उस क्वालिटी पे क्लिक करना है। क्वालिटी पे क्लिक करने के बाद आपको 240 144 पी ऐसे करके आएंगे। वहाँ पे HD मतलब बहुत सारे आएंगे, तो उन क्वालिटीज़ को आपको सेलेक्ट करना है और थोड़ी सी हाई क्वालिटी पे जाना है। मतलब जो ब्लर है वीडियो तो हाई क्वालिटी पे देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा नेटवर्क स्लो आता है तो वो 144 पे हो जाती है, तो हमें उसे 144 से 430 या ऐसे मे बी 340 कर देना है। ठीक है, जिस पे आपकी क्वालिटी अच्छी इंक्रीज़ दिखे। Okay, I hope you like it. Please like my channel, please subscribe and don't forget to comment and share my videos. Bye guys, Allah Hafiz.